एक बड़ खबर आरंभ करबा बुलेटिन। भारतीय युवती को सांघाई विमान बंदर में अटक घटना को नहीं भारत और चीन विवाद बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश जांगनान चीन अंश बोली दाबी करिछि बेजिंग। वैदेशिक मंत्रालय कहिछि अरुणाचल प्रदेश भारतर अविच्छेद अंग एवं अभिन्न अंश। सूचना अनुसार लंडन में रहुतबा जड़े भारतीय वंशोद्भव पेमा वांगजम थंगड़क नवेम्बर 21 तारिख में लंडन रु जापान जाउथबा बेले सांघाई विमान बंदर में एभली समस्यार सम्मुखीन से होइथिले। विमान बंदर अप्रवासन अधिकारी तांको पासपोर्ट अवैध बोली घोषणा करथिले। यार कारण थिला जे तांको जन्मस्थान में अरुणाचल प्रदेश लेखा थिला। एथिपाई तांको विमान बंदर में 18 घंटा काल निर्यातना दिया जाइथिबा से अभियोग करिसेंते। अन्यपटे भारतीय महिला को निर्यातना दिया जाई नहीं एवं अरुणाचल प्रदेश चीन अंश बोली बेजिंग कहिबा परे भारत तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। चीन पक्ष याकू जेते मना कले मध्य ए वास्तवता को परिवर्तन करा जाई पारिबो नाही बोली विदेश मंत्रालयर प्रवक्ता रणधीर जयस्वाल कहिसंते। I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And basically, I went past the e-gates, happily queuing up for the security gates to transfer onto my next flight onto Osaka in Japan. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue, basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China, your visa not acceptable, your basically passport is invalid. Very confusing moment, obviously, because never heard of that before. We obviously are a proud Indian citizens, all residents of Arunachal Pradesh. And basically, she wouldn't give me an explanation. She wouldn't let me go back into the queue, said you cannot board the plane. Then other officials came. So actually, I probably interacted with around 10 other immigration officers. So another lady came, took me to another part of the airport. And in fact, when I tried to question them and ask them what was the issue, they said Arunachal is not part of India, very clearly. And they said, you should apply, and started mocking and laughing and saying things like, you should apply for Chinese passport. You're Chinese, you're not Indian. Some mockery around there. Then basically they took me to the transfer desk of China Eastern, which is next to an immigration desk. And they would just keep basically sending me from one desk to the other. So if I ask the Chinese airline, they tell me to go to the immigration tells me to go to them. And they basically didn't give me a straight answer. I said, where is the law? What rights have you got to hold me back here? So ultimately, it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. आपण शुणुले संगीन अभियोग ए बाबद में अधिक आलोचना करने आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ श्रीजुक्त मानस बेहरा आम सहित जोड़ी होती। सर आपको स्वागत करुच्ची कनेक्ट न्यूज को। भारत चीन भितर सीमा बद सर जदिव ये नुआ नुहे किंतु भारतर गोटे अंचल को निजर बोली दाबी करवा नहीं जनकर पासपोर्ट को अवैध कहवा उड़ाण भरवा को न दबा ये आपन को सर केमती देखुं घटना को जड़े भारतीय को आप चाइना बोली कहुच्छे। चीन एतादृश कार्य समस्त कूटनैतिक बदनामी नियम एवं आंतर्जातिक आईन ता सहित जन महिला मौलिक अधिकार आंतर्जातिक सीमार ये चरम उल्लंघन करुच्ची। जो अधिकारी एते संपृक्त चीन ता विरुद्ध दृष्टान्तमूलक कार्यानुष्ठान नवा कथा भारत तीव्र प्रतिवाद करछि। जन महिला जाउछंती से भारतीय पासपोर्ट अच्छी एवं अरुणाचल लोक बोली कहुच्छे प्रेमा थंगडम को जे तमे चाइना पासपोर्ट करवा उचित अनप्रोफेशनल बिहेवियर। ये चीन जी अधिकारी पानी दौना खाइबा दौना गोटे सुखिला बिस्कुट दौरान यहाँ समस्त डिप्लोमेटिक रूल जोटा अच्छी आंतर्जातिक आईन नियम सी जाइछंती पुणी चाइनीज एयरलाइन फ्लाइट टिकेट अच्छी जदि सी सांघाई जो भारतीय दूतावास अच्छी से पहुंची पार न
ताल तो आहरी भयंकर अवस्था होता से तो बांति लगुच तो एत अमानवीय कार्य आगुरी आम जानी बॉर्डर डिस्प्यूट आम चीन सहित अच्छी एवं संपर्क स्वाभाविक हो बंधुत्वपूर्ण संपर्क रही से विषय से अधिकारी सचेतन डेफिनेटली जन लीगल वैलिड पासपोर्ट अच्छी लीगल वैलिड टिकेट अच्छी एवं 24 घंटा कम समय ट्रांजिट रही से दरकार नहीं भिसा से कथा जानी सी जापान जाऊँच लंडन से हाईली एजुकेटेड महिला एवं चाकरी कर समस्त सत्वे ये गोटे साडिस्टिक प्लेजर नवा अरुणाचल प्रदेश आमर तुम कहीं कर ये कथा कह जाए जोखिम करा जाए लोक तेणु भारत दृढ़ प्रतिवाद करी सांघाई दिल्ली रे किंतु चीन की प्रेसर करिया कथा जो अधिकारी मान दायी कार्यानुष्ठान हवा कथा एयरपोर्ट कर्तृपक्ष जो सांघाई विमान बंदर रे घटना घटिला जड़े भारतीय पाखे गोटे लीगल पासपोर्ट अच्छी जो अंचल मेंशन करा जायछि केमिति से अंचल को जड़े निजर बोली दाबी करि परिबे एयरपोर्ट रो कर्तृपक्ष आउ तांको जीवाकू भी दिया जाउनी ठीक है पागल पूरा चीन कर्तृपक्ष पाखे मैंने जापारे ये जो महिला जनक प्रेम थंगडक ये एयरपोर्ट रो ऑफिसर जी पाखे छड़ा गलानी सुजोग दिया गलानी से बाहर को आसी कनसुलेट गले बोली भारतीय सरकार साहाଯ୍य कले से आसिले से जो जो 2-3 जन संपृक्त एथिरे तो ये गोटे माने जो चाइनीज मनोभाव उग्र चाइनीज मनोभाव ठीक अच्छे तुम चाइनीज मनोभाव तुम भीतर रख तुम जन महिला को ये अपमान कर मौलिक अधिकार उल्लंघन कर बिस्कुट शुखिला बिस्कुट खान दब पानी दिए से पाइबे बांति बांति लगे साहाଯ୍य ना ये चीन रो छवि विश्व रे खराब करियो ता से तो ये छोटिया छोटिया कथा जोटा ऑलरेडी भारत कहि सारछि जे हम एतले भलो संपर्क आडू जाउ जे छोटिया छोटिया कथा बाधा बा प्रतिबंधक सृष्टि करियो तो यार बेस्ट सॉल्यूशन हो जी तांको निहाती सस्पेंड करिया कथा विदा करिया कथा से एयरपोर्ट रो चीन कर्तृपक्ष तन कोन करूछन देखिया कथा भारत दाबी ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर आलोचना पई डॉक्टर मानस बेहरा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होइतिले संपर्क रे आलोचना करूथिले।